Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. I am doing good too, and today I am just getting ready for my dad's birthday dinner. Usually, of lately I've stopped filming a lot of personal vlogs, but today I don't know, felt like doing a vlog, so I have just taken a bath, just done quick skincare and all of that, and I've just come back. And this is one parcel that I received. I placed an order on a lens cart and I received this too. This is purchased by me. इसका उद्घाटन कर लें and मैंने लिया था शेड ग्रे. इसमें सिल्वर ग्रे भी था और ये ग्रे वाला भी था, तो सोचा कि आज इसको ट्राई कर लूँ. गर्मी बहुत है एंड अभी नवरात्रि दशहरा वगैरह चल रहा है, तो हम लोगों को था कि कहीं बाहर नहीं जाना, बट बिकॉज इट्स हिज बर्थडे वी आर गोइंग. अभी कहीं पे भी ट्रैवल करो इट्स लाइक क्रेज़ी. सो आई सिंस आई हैव टू डिफरेंट पावर्स एंड टू डिफरेंट आइज़, मैंने सिंगल ही मंगवाया था. आई डिडंट नो इफ़ दीज विल सूट मी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग आउट aqua lens के lenses. So that's nice. I don't know how they look like yet. अभी मैं मिरर में देखूँगी तो I will get to know. But I decided instead of wearing western today, I will wear something Indian. I've never been that kind of a man who is be like you have to wear Indian clothes itself. You have to be a certain way because you're a girl, like how this eye is the problem I all the time. Like my father never told us anything in the sense कि you have to wear this type of clothes or anything as such. Growing up we didn't have any kind of restrictions like हमें ये ऐसे टाइप के कपड़े ही पहनने चाहिए, as in a woman should be like this or whatever. So हम लोग कभी भी वैसे ग्रो नहीं हुए जैसे typical Indian families में होते हैं. But I've always noticed कि my dad likes it when I wear Indian clothes, so I had got this stitch during Ramzan, and I haven't worn it. I kept it for this occasion itself, so I thought I will wear that. And rest of the things I've already done, like skin prep, hair को भी मैंने serum वगैरह लगा लिया है. So I've done all of that. I just wanted to do a quick makeup and just get ready and show it to you guys. By the way, let me know how are the lenses looking like. अभी तक मैंने first peek नहीं लिया है, and I am going to be doing something called as underpainting. मैंने outfit पहन ही लिया because I thought I'll get it जब मैं पहनूंगी तो मैं destroy कर लूँगी, जब मैं मेकअप करूँगी तभी भी मैं destroy कर लूँगी. Anyway, मैं मिरर लेने गई थी, ड्रेस पहन के आ गई, मिरर लेके नहीं आई. Okay, I'll go back. This is the first time I'm seeing my eyes and they look really pretty. I used to wear color lenses way back, like way back, and I stopped wearing lenses because first of all I stopped wearing lenses itself because I used to always have this problem where my eyes used to get infection. So this is the first time I'm wearing aqua lenses. I've never worn them. By the way, मैंने monthly pack लिया था. मैं ये लिंक डाल दूँगी, अगर आपको लेना हो तो आप जाके ले सकते हो. अंडर पेंटिंग में क्या होता है कि पहले सारे जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ब्लश, हाइलाइटर हो गया, ये सब पहले किया जाता है, उसके बाद फाउंडेशन लगाया जाता है to give that soft flushed kind of a look. So that's what I am trying to do. So this might look a lot on the face currently, but जब भी फाउंडेशन के ऊपर मतलब इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाओगे ना तो it looks really nice. इसके ऊपर ही ना on the high points of the face I will add the sugar on the light liquid highlighter. So this is the one I really love, but इसका wand भी नहीं work करता है. I don't know, I have a issue with these wands. I don't know, they don't work well for me. इसको भी मैं अच्छे से blend कर लूँगी. This is Color Bar's sponge, but I'm not liking it. It's very thick. I mean, it's very hard for me. I know a lot of people rave about Color Bar's blender, and I don't know, for some reason I feel like I might have got a duplicate one or something like that, because quite frankly this is very hard. Can you see that?
Now I am going in with Mamaearth foundation. So मैंने ब्लश लगाया था इनसाइड का, इसका शेड है 05 स्ट्रॉबेरी ड्रिप. तो नेक्स्ट मैंने जो हाइलाइटर लगा था वो 01 बेब ब्लेज है. I am going to be applying it all over my face using the sponge because I am feeling that मैं अगर ये हाथ से लगाऊंगी तो मैं पूरे कपड़े पे टच कर लूँगी एंड आई हैव दैट हैबिट. देख ही सकते हो ब्लश अच्छे से मर्ज हो गया है. एंड या दैट इज़ द ट्रिक फॉर दिस sponge is horrendous. I have to buy another sponge. I don't know, I think I got a faker one because look at that, how hard it is, and it's not expanded much. That's the other thing. From like you want a soft glam kind of a situation, it is always best to do under painting and to take whatever I can on my forehead because I have a lot of square footage on my forehead. And this sponge is absorbing anything and everything, and I've literally taken 3 pumps full of foundation, and that's never the amount I take. So this one is absorbing everything, getting everywhere. It's like making my entire process messy. My mic decided to die on me, and then my camera itself didn't record the next set of clips. तो next clips में आप देखोगे कि मैंने आई शेडो बेस लगा लिया है, वो स्विस ब्यूटी का पासपोर्ट साइज से कर लिया था बस. Today is not my day clearly. I used Ilia's mascara. It's a little bit more. आप यहाँ देख रहे हो कि मैं आईज पे भी सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज आई वांटेड टू टोन इट डाउन अ लिटिल बिट. मुझे बहुत रेडिश लग रहा था. सेट इट विथ पैक सेटिंग स्प्रे. Pretty much done. Now I need just to apply a lipstick and we are sorted. Planning to use 2 shades. One will be from the Faces Canada Ultime Pro range. I wanna using Swiss Beauty's shade Bare and apply that in the center. We are done, so I'll show you the full outfit in a minute and then we will head out. विश करो. विश करो. कट करने से पहले फूको कैंडल. पहले फूकना तो विश कर को फूको. फूको कैंडल फूको. Very nice. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa. Happy birthday to you. परत जायचं खडो या 1 by 1. बाद हम हमारी फेवरेट प्लेस साइलेंट शोर्स चले गए टू हैव अ नाइस डिनर बिकॉज यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है एंड इवन इट इज़ वेरी पीसफुल. और मैचेस भी चल रही थी तो बड़ा स्क्रीन भी लगाया था. After this we went to have tea, coffee. This is also a tradition कि हम लोग खाने के बाद कहीं टी या कॉफ़ी की जगह जाते हैं. तो हम ये जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. आज मैंने फ़िल्म कर लिया. यहाँ पे बहुत टाइप की टीज़ मिल जाती हैं. ग्रीन टीज़ भी बहुत वैरायटी में मिल जाती हैं. एंड जस्ट थॉट आई शो यू ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट इज सर्व. सो आई जस्ट थॉट आई शो. Alrighty you guys, this is it for the vlog. I hope you enjoyed it. I will see you guys in the next one. Till then, take care, stay safe, bye.